you can easily convert them into cash. Invest in stocks to save for a retirement. Obviously, there are some investment option in stock market where you can start planning for your retirement even if you are in 20s. So you can invest a lot amount of money if you just start investing today. So there is a price of your procrastination. I always recommend on my Instagram or on my YouTube or wherever I give live sessions, I always say people to, even if you are a student or if you can afford some small amount of money, 500,000 rupees, it doesn't matter. But you should start investing as early as possible, because start small with small amount. It doesn't matter, but start early, because starting early is more important than starting later with more amount of money. That the typical mindset of Indians कि हम सोचते हैं कि हम नौकरी लग जाएगी, फिर 25-30 साल की उम्र में हम ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे because you will be having salary. बट वो ये नहीं देखते कि सैलरी के साथ एक्सपेंसेस भी उतनी आते हैं. सो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिहेवियर. सो स्टार्ट अर्ली. एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि नॉट आई विल से हाइपोथेटिकल, रियल भी हो सकती है. सो देयर आर टू फ्रेंड्स, आदित्य एंड अंकित, एंड बोथ आर presently at 65 years and both are talking with each other. तो आदित्य बोलता है कि I started at the age of 20 and I invested around 4,000 per year till the age of 40 and I got 10% return. अंकित भी ये बोलता है कि I started with 4,000 rupees but I started at 40. मैं इंडियन था और मैंने 40 में स्टार्ट किया है, but I continued till 65 मेरे रिटायरमेंट तक. But even though Ankit like invested for 25 years, 5 more years than Aditya, who do you think that at present जब वो बात कर रहे हैं तो उनके पोर्टफोलियो में किसके पास ज्यादा पैसा होगा? आदित्य. And how much? Like, can you guess the amount? कि how much amount will be the difference? दोनों में क्या difference होगा? More than 5 to 10 times. A pretty close answer. So it will be like more than 6 times. So you can see the graph, because Aditya started at the age of 20, so he will be giving investments more time and he can leverage the power of compounding. But Ankit on the other hand will be starting at 40, so he will not be having decent amount of time to let his investments enjoy the power of compounding. So Aditya will be earning 6 times more than his friend Ankit. And invest in stocks because you can be a part of company you love. Coca-Cola, you drink a Coke, you use like US कंपनी के हर प्रोडक्ट को तो हम हर मिनट ही यूज करते हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, टेस्ला, जो भी हो, कुछ भी हो. इन इंडियन कंपनीज में भी बहुत सारी कंपनीज हैं whose product and services you will be using in our everyday lives. So there's an opportunity only in stocks where you can invest in the money in which brands you see yourself or you use yourself in day-to-day life, and you will be seeing that your money grows as your favorite brand or company grows. So for investing in stocks, you require a demat account. So demat account basically is a short form for dematerialized account. So dematerialized or demat account basically allows you to hold your shares in an electronic format. पहले क्या होता था कि like why demat account was required? Because earlier it was storing, sharing or transferring shares was not done in electronic format. पहले क्या होता था कि सारा पेपर वर्क में चलता था. So people used to face a lot of difficulty कि वो physical shares चोरी हो जाते थे. Either they used to get lost, stolen or torn, or वो misplaced हो जाते थे. But when the demat thing started like 10-12 years back, तो storing shares became more comfortable. Like you can have an account with any of the brokers, तो वो आपको डीमेट अकाउंट देंगे and you can just hold your shares just like you use Instagram app. बिल्कुल simple, same वैसी प्रोसीजर. So what are the documents required for opening a demat account? PAN card, Aadhaar card, or bank statement or cancel check. So basically these are some requirements. जो आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पे, so for doing the KYC they required all these some basic financial identity proofs. And where to open your demat account? You can use Upstox, Zerodha or Grow. So like all three are very good platforms and they are free. They don't have their charges. Yeah, there are some charges for annual maintenance charges और जो टैक्स वगैरह डिडक्शन है और स्टॉक मार्केट एक्सचेंज की चार्जेस हैं, but pretty much they are kind of a free apps. And
pretty much simple to use. I use all three of them. So if you are like doing more trading, so you can use Upstock and Zerodha because they have technical charts. But if you are a long-term investor, so you can even use Grow. So Grow be decent. And mutual funds. So ऐसा शायद बचपन में सभी ने प्रॉब्लम ये फेस की होगी इन वन फॉर्म और अनदर. आइदर यू विल बी देखते हैं पहले ये एग्जांपल देखते हैं. सो सपोज देयर इज अ चॉकलेट बॉक्स दैट कॉस्ट 100 रुपीज एंड देयर आर 10 पीसेस इन इट. एंड ऑब्वियसली इफ यू आर बचपन में 100 रुपए शायद इकट्ठा करना भी मुश्किल होता था. सो सपोज यू आप अपने दोस्तों को बुला के लाए एंड यू आस्क देम टू कंट्रीब्यूट अ लिटिल मोर. जैसे हम अभी NITJ में भी कंट्रीब्यूशन कर देते हैं अगर किसका फाइनेंशियली थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ड्यू टू पैंडेमिक. सो वो अच्छी बात है. सो म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसा ही है कि कंट्रीब्यूट करते हैं और एक पर्पस एक गोल के लिए जाते हैं. सो लाइक सपोज वन फ्रेंड कंट्रीब्यूटेड 30 रुपीज, अनदर 20 रुपीज, वन 10 रुपीज एंड वन फोर्थ फ्रेंड कंट्रीब्यूटेड 40 रुपीज. सो टुगेदर ऑल ऑफ देम, 4 of them accumulated 100 rupees and they bought the chocolate box. So logically it makes sense कि अगर मैंने 30 rupees contribute किए थे and the chocolate box has 10 pieces, so I will be getting 3 pieces of it. 20 rupees contribution के साथ I will be getting 2 pieces of chocolate, 10 rupees के साथ 1 piece and 40 rupees के साथ 4 piece. So that's like the simple fund that happens in mutual fund as well. So mutual fund में भी क्या होता है कि people like us collectively put money to invest with the same investment objective and expect returns. उन बच्चों का collectively they invested 100 rupees और objective क्या था to buy a chocolate box. Similarly, thousands of or lakhs of investors in mutual funds buy a mutual fund to fulfill or to reach a particular investment goal. कि हम long term large cap stocks में invest करेंगे. ठीक है, तो वो उनका हो गया इन्वेस्टमेंट गोल. जैसे इन बच्चों का क्या इन्वेस्टमेंट गोल था कि दे हैड टू बाय द चॉकलेट बॉक्स. And obviously when the returns are there, like a mutual fund earns some return, so the returns are proportionally distributed to the shareholders या जो भी म्यूचुअल फंड के मेंबर्स हैं. तो हर किसी को वो प्रोपोर्शनली जो भी गेन्स होता है उस म्यूचुअल फंड में they all get proportionally gains distributed according to their own contribution. And as I said, the returns are distributed proportionally with each investor, same like the chocolate boxes or the chocolate pieces were distributed proportionally with the amount of money that the friends contributed. So name में ही उसका meaning छुपा हुआ है. Mutual मतलब mutual means from many people and fund means a pool of money. So people pool in a large number of money together. Thousands and lakhs of investors contribute in a single mutual fund. And mutual fund has some objective कि this mutual fund will be investing in stock or indices. जिसमें भी invest करना है, that money is invested is handed over to a mutual fund manager, and the manager handles all the money of the people, and he invests because he like knows better than a normal person and he is expert in his field. तो वो जो पैसे invest करता है and he the mutual fund investors or the people expect कि हमें कुछ returns मिलेंगे और वो रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट के प्रोपोर्शनली हमें मिल जाएगा. सो दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड. सो व्हाई म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट होंगे? द सिंपल रीजन इज बिकॉज पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ स्टॉक मार्केट या उनको नॉलेज नहीं है या टाइम नहीं है. सो दे हैंड ओवर देयर मनी टू अ म्यूचुअल फंड मैनेजर. सो पीपल हु लैक want to invest in stocks and bonds but lack time, knowledge or experience to invest directly. So they just invest in the stock market or bond market via mutual fund. So how to invest in mutual funds? These are 3 simple apps: Paytm Money, Grow and Coin, and all of them are free. I use Paytm Money as well as Grow, और Coin भी use किया है मैंने. So इसमें भी आप कोई भी यूज कर सकते हो. All have the simple basic simple UI है and they charges no money. All of them are free. So there are 2 ways to invest in mutual funds. First is lump sum and second is systematic investment plan. So in lump sum और SIP, आपने मतलब म्यूचुअल फंड की आजकल ऐड आती होगी, क्रिकेटर्स को देखा होगा. So SIP के बारे में वो बात करते हैं कि 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो.
सो बेसिकली वो एसआईपी के बारे में बात करते हैं. पहले पर लमसम देख लेते हैं. सो लमसम, टी साइलेंट इन द लमसम, सो लमसम बोलते हैं उसको. एंड इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. सो सपोज यू हैव 10 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज एंड यू जस्ट वांट टू इन्वेस्ट टुडे, और डायरेक्टली आप चाहते नहीं हो कि मैं हर महीने डालूं. तो इफ द मार्केट इज डाउन, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि माई मनी विल बी ग्रोन आफ्टरवर्ड्स, तो और मार्केट भी डाउन है, सो आई जस्ट चूज टू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज. अगर मेरे पास पड़े हैं एक्स्ट्रा या फिर वो मनी का कहीं यूज नहीं हो रहा, सो मैं लमसम कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली 10 लाख रुपीज सिंगल वन गो में वहां पे इन्वेस्ट कर दूं म्यूचुअल फंड्स में. And the second investment option which like 90% of the people prefer and do is SIP, systematic investment plan. So systematic investment plan is not an investment option. A lot of people confuses it with the investment option कि मैं SIP में invest करना है. तो SIP में invest नहीं होता. SIP is a mode or a method or a, I will say a mode ही बोलूंगा, mode to invest in mutual funds or index funds. तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक मीन्स कि ऑब्वियसली हर महीने की कोई एक पर्टिकुलर डेट होगी, कोई पर्टिकुलर अमाउंट होगी. सो सपोज आई चूज टू इन्वेस्ट, आई पर्सनली इन्वेस्ट लाइक माई फिक्स अमाउंट ऑफ मनी ऑन 15th of every month. सो बेसिकली जो मैं 15 तारीख को हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज SIP. तो एंड यू कैन चूज अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एंड यू चूज अ पर्टिकुलर डेट. And so that's a disciplined kind of investing, and it is also less risky than lump sum, because lump sum में क्या है, you have to time the market कि मैं अगर आज कर रहा हूँ तो कल क्रैश ना आ जाए, क्योंकि आपका कैपिटल रिस्क पे है. बट इन SIP, इवन इफ आई एम इन्वेस्टिंग SIP टुडे, अगर टुमारो कल जाके क्रैश भी आता है, सो इवन दैट इज नॉट वेरी much a difficult task for me, because I will be getting more number of NAV units or shares when the market dips. So SIP is a kind of systematic investment plan, and it's very less risky than lump sum. And advantages of mutual fund, we discussed why mutual fund exists, for those who have a lack of knowledge and time. And you also get to diversify with a small amount of money. Even when you start investing in mutual fund with 500 rupees, तो आप ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हो. डाइवर्सिफिकेशन का बेसिकली मतलब ये है कि you get to invest in a lot of companies with a small amount of money. Like suppose there are mutual fund which invest in 50 large cap companies in India. So if you tend to buy them via stock market investing or a direct stock market investing, so हर कंपनी का अगर शेयर भी सपोज मान लेते कि 1,000 रुपए का है, तो आप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो आपको 50,000 का कैपिटल चाहिए मिनिमम. बट व्हेन यू इन्वेस्ट वाया म्यूचुअल फंड्स, सो यू कैन जस्ट डाइवर्सिफाई और इन्वेस्ट all of those 50 companies with just a small amount of money. 500 में भी आप कर सकते हो. क्यों? क्योंकि 500 लाइक हजारों लाखों इन्वेस्टर डालते हैं. तो द म्यूचुअल फंड मैनेजर विच इज मैनेजिंग लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ पूल ऑफ मनी, तो उसके पास वो ज्यादा ऑप्शन रहती है कि वो हर कंपनी में कर सकता है. तो वो 500 मिलके काफी बड़ा एक अमाउंट हो जाती है वो म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास. तो यू गेट अ लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. And disadvantages of mutual funds, there are two disadvantages. First is they are actively managed mutual funds, which means that the fund manager on a day-to-day basis research करता है. He take a decision actively when to buy a stock, when to sell a stock, how much to keep in cash, how much to increase the holdings. तो ये सारे decision actively होते हैं. And when there is an actively decision making, they charge high money for it. So the expense ratio is basically the money that they charge from you because of managing your money. Because वो manage कर रहे हैं आपका पैसा, तो free में तो करेंगे नहीं. So they charge a money, जिसको हम बोलते हैं expense ratio. तो वो ज़्यादा हो जाता है. और एक सेकंड ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इंडेक्स फंड्स. सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस आपके लिए मतलब अभी परफेक्ट है, बिकॉज इफ यू आर अ बिगिनर और डोंट नो मच अबाउट स्टॉक्स, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन इवन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इट विदाउट हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज. अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, सो दिस इज समथिंग यू कैन इन्वेस्ट. So what is market index? So market index basically tells you the overall mood of the market, and like there are thousands of companies listed on the stock exchange, है ना. तो thousands of companies के stock ऊपर नीचे डेली होते रहते हैं, एक पर सेकंड बेसिस पे भी वो चेंज होते रहते हैं. So for a person जिसको बस ये देखना है कि मार्केट आज ऊपर है या नीचे, तो how can he do it? So market index जैसे अपने बुक के आगे इंडेक्स होता है ना, the index in front of
the pages of the book tells us कि इस book का content क्या है या इस book का chapter ये chapter कहाँ से start हो रहा है. So the index in a book tells you about the description of the book, है ना. तो similar market index tells you about the overall mood of the market without you having to look on all the 1000 companies के shares आप check करो. तो एक index आपको पूरी market का हाल बता देता है. So please listen this carefully. ये बहुत important एक और simple भी चीज है. So there are two mega stores in India. या इसको ना there are two stock exchanges, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. और इनको ना एक शॉप की तरह समझना. So suppose there are two shops in India, एक BSE और एक NSE, and both are situated in मुंबई में ही है. So BSE में क्या है 5000 कंपनीज लिस्टेड है and NSE there are 1900 कंपनीज लिस्टेड. तो एक ऐसे समझ लो कोई शॉप है जिसमें 5000 प्रोडक्ट्स हैं और एक शॉप में 1900 प्रोडक्ट्स हैं. और 1900 अगर आप टी शर्ट लेने जा रहे हो तो सपोज 5000 टी शर्ट्स हैं और एक में 1900 टी शर्ट्स हैं. एंड लाइक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज क्रिएटेड अ इंडेक्स सेंसेक्स, जिसमें उसने क्या किया कि 5000 अपने कपड़ों में से या 5000 आइटम्स में से सिर्फ 30 अच्छे आइटम्स को पिक किया है एंड दे हैव क्रिएटेड अ बास्केट ऑफ 30 कंपनीज जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी क्या किया, सेम चीज किया, but they have made a portfolio or made a basket of 50 companies instead of 30 companies. Nifty में कितनी है 50 companies. तो वो 1900 companies में से they have shortlisted some 50 companies that are like जो वो 30 or 50 companies हैं, they are big in size, they have like decent amount of employees और उनका turnover like last 30 years से बहुत अच्छा रहा है. So they are the top well established 30 or 50 companies of India. So what does your hemoglobin or thermometer do? So basically they are indicators. They indicate your oxygen level और thermometer आपका body का temperature बताता है. So same like Sensex or Nifty are market indicators and they tell you about the overall mood of the market or overall the current situation of the market. So Sensex, as I said na, it is a index of Bombay Stock Exchange BSE, which has a list of 5,000 more companies and they have just shortlisted or created a basket of only 30 well established companies of India. उन 30 companies में से कौन सी आती हैं we will see. So Sensex word कहाँ से आया है, sensitive plus index. So first वो Sensex का SENS यहाँ से आ गया और index का EX आ गया, तो Sensex. So these are all the 30 companies that are listed in Sensex. So you can see Reliance, HDFC Bank, SDFC, ICICI Bank, ITC, Infosys, TCS. So all these are well established companies of India, 30. ये 30 companies ना. So Nifty is also a index of National Stock Exchange, NSE, which has a 1900 plus companies and they have shortlisted or created a basket of 50 well established companies. It is made from the word national plus 50. National ये National Stock Exchange का और 50 because there are 50 companies. So उसको ऐसे करके Nifty word बना दिया. And all these 50 companies in Nifty यही है, HDFC Bank, Reliance, ये सब जो भी है. So ये 30 और 50 companies में से like most of the companies are mutual कि वो इसमें भी हैं और इसमें भी है. So like around 25 or more than 25 companies are mutually present in both Sensex and in Nifty. So what are index funds? तो ये हमने देख लें कि इंडिया में भी दो पॉपुलर इंडेक्स हैं, Sensex and Nifty. Sensex is a basket of 30 stocks out of 5000 companies में से and Nifty is a basket of 50 companies out of 1900 companies. So index funds. So नाम से पता लग रहा हो कि इंडेक्स फंड्स हैं, तो ये इंडेक्स को कॉपी करते होंगे. So index mutual funds is a type of mutual fund, मतलब it is a subtype of mutual funds in that invest in stocks and copy a particular index. जैसे NSE का Nifty 50 इंडेक्स था और BSE का Sensex इंडेक्स था. So basically they copy a particular index. जैसे ये तो मैंने बता दिया ना आपको. अब ये copy a particular index का क्या मतलब है कि जो ये 30 कंपनीज और 50 कंपनीज हमने देखी ना लिस्ट में, so they have a weightage. Like it's not कि जो 30 कंपनीज है उनका equal weightage है उस इंडेक्स में. The larger company जो Reliance है, like it is the biggest company of India, so it has a more weightage in the index. तो Sensex जो Reliance का weightage है, it is close to 15-14%, and HDFC Bank it is close to 7-8%, Infosys 6%, TCS 6%. So all these companies जो बड़ी-बड़ी companies हैं उसका उस index में weightage आता है और धीरे-धीरे करके ये 30 कंपनीज का आप अगर वेटेज प्लस करोगे तो 100% एक वो मिल जाएगा आपको बास्केट. और निफ्टी में भी जो 50 कंपनीज में से जो अच्छी कंपनीज है उनका
उनका उस पर्टिकुलर इंडेक्स में वेटेज ज्यादा है और बाकियों का थोड़ा थोड़ा कम है। सो ये कुछ वेटेज है। तो सेंसेक्स में जो भी 30 कंपनीज हैं उसमें रिलायंस वेटेज है कि 15.93, एचडीएफसी का 11.03, एचडीएफसी बैंक का 11.03, एचडीएफसी का 7.67, आईसीआईसी का ये। So when you invest in a mutual fund, so if you invest in an index mutual fund, if you invest 100 rupees, so your out of 100 rupees, 15.93 will be devoted to Reliance, will be invested in Reliance. 11.03 will be invested in HDFC Bank. 7.67 will be invested in HDFC. So basically, your money will be invested in a such proportion in an index funds, in which proportion that particular stock or particular company holds a weightage in that index. जो भी उस इंडेक्स में उस पर्टिकुलर कंपनी की वेटेज है उसी के अकॉर्डिंग और उसी के प्रोपोर्शनली योर मनी गेट इन्वेस्टेड इन द इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। सो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स का एडवांटेज है कि इट इज पैसिवली मैनेज्ड, लाइक वी सॉ कि इन द म्यूचुअल फंड्स योर मनी इज एक्टिवली मैनेज्ड बिकॉज the mutual fund manager takes decision actively, but in an index mutual fund it is passively managed because the fund manager does not have to take decision on a day to day or actively basis, because उसने एक बार ये कॉपी कर दिया तो वो अगले 6 महीने बाद 3 महीने बाद ही बस चेंज करेगा। तो इट इज बिकॉज अ कॉपिंग काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग कि मैं बस उस इंडेक्स को कॉपी कर रहा हूँ तो मेरा उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा, तो दिमाग नहीं लग रहा तो मैं पैसे भी ज्यादा नहीं दूंगा। सो दैट्स व्हाई इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स हैव अ pretty much less or lower expense ratio than the mutual funds, और यही इनकी सबसे खास बात है because they have a lower expense ratio and they are very pretty much simple and they are also very safe and risk free in the long run. So if you are a beginner and even if you don't know ABCD of stock market, but index funds are something that you can start with, but always invest in long. So this is our action plan, what we have discussed, or summary of our today's session. So invest in index with a course with my co-founder जो मेरा classmate है. So तो साथ में काम करते हैं. So together we have launched our course, The Ultimate Guide to Stock Investing, and it is to be held 19 June to July, and we will be teaching ये सारे चीजें हम सिखाने वाले हैं. देख लेना आप. It is a 10-day weekend course. Like हर Saturday Sunday को 19 जुलाई को हर सैटरडे संडे को एक कोर्स है, एंड फ्रॉम 2:30 सेम टाइम है फॉर 2 hours एवरी सैटरडे संडे फ्रॉम 19 जून टू 18 जुलाई. सो ये 10 क्लासेस हैं एंड 2 सेपरेट क्लासेस फॉर Q&A और रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी अवेलेबल है. सर्टिफिकेशन कोर्स है, प्लस इफ यू वांट टू एनरोल और इफ यू विश टू एनरोल सो यू कैन एनरोल बाय 18th June, एंड दिस इज द लिंक. एक्सक्यूज मी सर, तो पीछे कर सकते हैं थोड़ा, तो वॉइस भी लैग थी. कहाँ पे सर जब आपने अपने कोर्स के बारे में बताया तो वो